So we're going to kick off this 2-day weekend with a session on achieving your personal best. तो सबसे पहले मैं अभी आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ आप अपना सबसे अच्छा बेस्ट कैसे अचीव कर सकते हैं. But since we're going to be spending 2 days together, I thought it would be helpful that you know a little bit of my story. हम लोग 2 दिन बैठेंगे तो मैंने सोचा था सबसे पहले मैं अपना स्टोरी बोलूँ आपको. You see, before I got started with this company, I was a real estate agent. इस कंपनी में आने से पहले मैं एक रियल एस्टेट एजेंट था. I was 23 years old when I started selling real estate. मैं 23 साल का था जब मैं आया था रियल एस्टेट में. And by implementing some of the things you're going to learn the next 2 days, over 4 years, I became the second highest producing real estate agent in the state of Illinois and top 15 in the United States. मैं आप लोग को सिखाऊंगा मैंने क्या किया उसको. उससे पहले बोल सकता हूँ मैं रियल एस्टेट में सबसे टॉप में था यूएस में. नंबर 4 में था और नंबर 15 में भी था. I then applied the same things that allowed me to be a top producer in real estate to my unicity business, and it allowed me to achieve amazing results. और वही चीज मैंने अप्लाई किया जब मैं आया यूनिसिटी में. मेरे को जो सक्सेस मिला था रियल एस्टेट में उसी को अप्लाई करके मेरे को इस कंपनी में भी सक्सेस मिला है. You see, when you strive for excellence to achieve your personal best, you can apply that to anything in your life. जब आप अपने आप को ठेलते हो अच्छा बनने के लिए तो उसी को अगर सब तरह आप अप्लाई कर तो किसी भी जगह में आपको मिलता है सक्सेस. And while I was very successful in real estate, I was under a great deal of stress and pressure. रियल एस्टेट में बहुत सक्सेसफुल था मैं जरूर, पर मेरे को बहुत स्ट्रेस था मेरे लाइफ में. I couldn't even go on a date with my wife on a Friday night without my pager going off 15 times. मैं शुक्रवार के दिन में अपने वाइफ के साथ डेटिंग भी नहीं कर सकता था. मेरा पेजर बजता रहता था. One day I was driving down the street just feeling the pressure I was under, and I asked myself, do I want to do what I'm doing the rest of my life? मैं एक बहुत प्रेशर में था. मैं गाड़ी चला रहा था और मैं अपने आप से पूछा कि क्या मेरे को यही काम करना है पूरे जीवन. I was 28 years old. I had a lot of life left. मेरा उम्र 28 का था और मेरे पास बहुत लंबा समय था मेरे पास. And it took me about 2 seconds to say, no, I don't want to live this way the rest of my life. मेरे को सिर्फ 2 सेकंड लगा था बोलने के लिए अपने आप को, नहीं मेरे को ये लाइफ नहीं जीना. So I said, well, what do I want to do? मैंने पूछा तो मेरे को क्या करना है. And I knew that I wanted to be in business for myself. और मैंने बोला अपने आप को मेरे को अपना बिजनेस करना है. But I didn't want a traditional business. मेरे को एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं चाहिए था. Because I would just be right back to where I was, a business with stress and pressure. अगर मैं वो करता तो मैं वापस उसी जगह पहुंच जाता जहां स्ट्रेस और प्रेशर होता. So I made a list of all the things that I felt was the perfect business. तो मैंने एक लिस्ट बनाया जहां मैंने देखा कि क्या-क्या चीज मेरे को चाहिए. I wanted a business that I could work from home. ऐसा बिजनेस जो मैं घर से कर सकता हूं. A business that wasn't affected by seasons, interest rates, or the economy. ऐसा बिजनेस जो सीजन से इफेक्ट नहीं होता, इकोनॉमी से इफेक्ट नहीं होता. A business where I could build a residual income. जिससे मेरे को एक अच्छा इनकम भी आता है. And so I made this long list. ये मैं एक लिस्ट बनाया. And then I went out searching for that perfect business. और फिर मैंने सर्च किया कि ये कहाँ मिलेगा मेरे को. I went to franchise shows. मैंने फ्रेंचाइज शोज में गया. Business opportunity shows. बिजनेस अपॉर्चुनिटी में गया मैंने. And I didn't see anything I liked. और फिर भी मैंने कुछ देखा नहीं जो मेरे को पसंद आया. And then, believe it or not, I was looking in a business opportunity journal and saw an ad. और आप मेरे को विश्वास करो मैं एक मैगजीन में देखा था एक एड. So I called the person. और फिर मैंने उस आदमी को फोन किया. And he says, Todd, tell me a little bit about yourself. और उसने बोला मेरे को टॉड तुम अपने बारे में बोलो मेरे को. So the first thing he did was he showed an interest in me. तो पहला उसने क्या किया उसने मेरे ऊपर इंटरेस्ट दिखाया. And after I told him I was a top producing real estate agent, he said, well, why would you want to do something else? जब मैंने बोला कि मैं रियल एस्टेट का टॉप एजेंट हूं तब उसने पूछा आप और कुछ क्यों अलग क्या करना चाहते हैं अभी आप. He was looking for my why. तो वो मेरा कारण पूछ रहा था. And so I told him why I was looking for something else. तब मैंने बोला उसको कि मैं क्यों एक दूसरा कुछ ढूंढ रहा हूं. And then I said, well, tell me about your business. तब मैंने बोला उसको तुम बोलो अपने बिजनेस के बारे में. And he said, Todd, this is not a business that can be explained over the phone. तब उसने बोला टॉड ये ऐसा चीज नहीं है जो मैं फोन में बोल सकता हूं आपको. I would be happy to meet with you and show you what I'm doing. मैं आपसे मिलना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं मैं क्या कर रहा हूं. And I said, well, I need to know what it is before I take my time and meet with you. फिर मैंने बोला आप थोड़ा सा बोलो मेरे को because मेरे को समय निकालना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए. He said, Todd, I know you're going to have a number of questions and I'm not prepared to answer them over the phone. उसने बोला हाँ टॉड मेरे को मालूम है बहुत प्रश्न होगा आपके पास पर मैं आपको फोन में नहीं बोल सकता ये सब. If you'd like to know what I'm doing, I'd be happy to meet with you. अगर आपको जानना है मैं क्या कर रहा हूँ तो आपसे मेरे को मिलना जरूरी है. And then I said, is it network marketing? तो मैंने बोला ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग है.
He said, Todd, I know that you have a number of questions, and as I've said, I'm not prepared to get into the details of our business over the phone. उसने बोला हाँ टॉड मालूम है तुम्हारे पास बहुत प्रश्न है पर जैसे मैंने बोला आपको फोन में सारा कुछ मैं बोल नहीं सकता. And then I said, is it Amway? मैंने बोला ये एमवे है क्या? And he said, it's not Amway, it's not Shackley, it's like no business you've ever seen before. Would you like to meet with me? ये ना एमवे है ना शैकली है, ये ऐसा बिजनेस है आपने कभी देखा नहीं है, क्या आप मेरे से मिलना पसंद करोगे? So we scheduled a time to meet. और फिर हमने टाइम फिट किया मीट करने का. Now, I had been very turned off to network marketing. मैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत नफरत करता था. Had he told me this was network marketing, you would not know me. अगर वो उस दिन मेरे को बोलता नेटवर्क मार्केटिंग शायद आप मेरे को यहाँ नहीं दिखते. Because I would not have taken my time to meet with him. बिकॉज मैं उससे नहीं मिलता फिर. But something interesting happened. पर कुछ अलग हुआ. When I was driving to meet with him, I was listening to a tape series from one of the top personal and professional development trainers in the United States. एक ऐसा अलग चीज हुआ कि जब मैं गाड़ी चला के उसे मिलने जा रहा था तो मैं एक टेप सुन रहा था, एक बहुत बड़े प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर का टेप. It was called How to Get Rich in America. वो बोल रहा था अमेरिका में कैसे पैसा कमा सकते हो. And he talked about the people who were rich were business owners. और उसने बोला जो दो लोग अमीर है वो बिजनेस ओनर है. And he talked about the fact that 97% of all wealth created in the United States was created by business owners. और उस टेप में उसने बोला कि 97% जितना भी वेल्थ क्रिएट हुआ अमेरिका में वो बिजनेस ओनर लोग ने क्रिएट किया है. And he said the best way to learn how to run a successful business is to first start off by building a network marketing business. और उसने बोला अगर आपको कुछ करना है उस बिजनेस के एरिया में तो आपको सबसे पहला नेटवर्किंग बिजनेस में आना चाहिए. He said 85% of what you will learn in running a network marketing business, you will be able to apply to running your traditional business. 85% आप जो सीखोगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो सारा सीख के आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो. Weird that I would listen to this on my way to meet with this guy. कैसा लग रहा है, मैं इसका टेप सुन के मैं जा रहा था उस दिन. So then we sat down. फिर मैं उससे मिला और मैं बैठा उनके साथ. He was professionally dressed. उनका ड्रेस काफी प्रोफेशनल था. Nice firm handshake. अच्छा हैंडशेक दिया उन्होंने. He showed an interest in me as we started off the discussion. उसने मेरे बारे में इंटरेस्ट लिया और हमने बातचीत शुरू किया. And then he started turning the page in his presentation book. और फिर वो प्रेजेंटेशन बुक का पेज घुमाने लगा. And then we got to the page talking about money. और फिर आया वो पेज जहाँ पैसे के बारे में हमने बात किया. And I said, this is network marketing. तो मैंने बोला ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है. But I was so impressed with him and what he had said, I finished listening to the presentation. पर उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं उसका पूरा प्रेजेंटेशन सुना. So then I went home after the presentation. I began to do my due diligence and research into this industry. फिर मैं घर गया और अपना रिसर्च किया इस इंडस्ट्री के ऊपर. And the more I learned, the more impressed I became. और जितना मैंने सीखा वो उतना मैं इम्प्रेस हुआ इस इंडस्ट्री के ऊपर. And then I said, well, why was I turned off? तो मैंने पूछा अपने आप को मेरे को क्यों खराब लग रहा है इस इंडस्ट्री से. And I determined I was turned off by the way people had approached me. तब मैंने सोचा कि हाँ लोग जैसे मेरे को अप्रोच करते थे पहले उसको देख के मैं नफरत कर रहा था इस इंडस्ट्री से. And then I made a decision that if I treated everybody with the respect I'd want to be treated, if somebody doesn't like me for what I'm doing, I don't need that friend anyway. तो मैंने समझा कि अगर मैं दूसरों को रिस्पेक्ट करता हूँ और अच्छी तरह बात करता हूँ, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो उनको मैं प्रेशर नहीं करता तो सब लोग मेरे को चाहेंगे. So after learning more about the company, I joined. और फिर कंपनी के बारे में जानने के बाद मैंने स्टार्ट किया बिजनेस. And I'll share over the next 2 days a little bit about what happened after I joined. और अगले 2 दिन में आपको मैं बोलूंगा इसके दौरान मेरे को क्या हुआ. But I had some great success as I started my Unicity business. किंतु बहुत सक्सेस मिला मेरे को इस बिजनेस के साथ, यूनिसिटी के साथ. My first year I earned almost 2 crore. पहले साल में मैंने 2 करोड़ कमाया. My third month I qualified as a diamond. तीसरे महीने में मैं डायमंड बना. My second year I earned almost 4.5 crore. 2 साल में मैंने 4.5 करोड़ कमाया. My third year over 6 crore. 3 साल के बाद मैंने 6 करोड़ कमाया. My fourth year over 9 crore. 4 साल में 9 करोड़ कमाया. My fifth year over 11 crore. 5 साल में 11 करोड़ कमाया. My sixth year over 12 crore. 6 साल में 12 करोड़. My seventh year 14 crore. और 7 साल में मैंने 14 करोड़ कमाया.
And now, over my 27-year career, I've earned 174 crore. 27 सालों में मैंने 174 करोड़ कमाया है. Now, one of the ways that I was able to get off to such a fast start was that much of what I did to achieve my personal best, I applied in my real estate career, and I just then transferred it to my unicity business. इतने जल्दी मेरे को सक्सेस इसीलिए आया बिकॉज रियल एस्टेट में मैंने जैसे मेरे अपने बिजनेस को बिल्ड किया था उसी तरीका से मैंने इसको अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में. Now, let me share with you what I view are the most significant benefits of this business. अभी मैं बोलना चाहता हूँ इस बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है. Number one is the ability for anybody to start a business part-time without interfering with their full-time job. इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हो, अपने फुल टाइम जॉब इसमें इंटरफेयर नहीं करता. I started working 1 hour a day, मैं 1 घंटा से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, then 2 hours a day, फिर 2 घंटा दिन में, then 3, फिर 3 घंटा दिन में, then 4, फिर 4 घंटा, and then I walked away from my real estate career to do this full-time. और उसके बाद मैंने रियल एस्टेट के छोड़ के इस बिजनेस को मैं फुल टाइम स्टार्ट किया. The great thing as well here in India, for some people who want to start full-time, this is a great business you can start full-time. इंडिया में अगर आप लोग इसको फुल टाइम करना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय है अभी आपको करने के लिए. As long as you're not under a great deal of financial pressure, you should do fine. अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है तो आप फुल टाइम कर सकते हो. Because people who are under financial pressure smell like they're under financial pressure. लोग के पास अगर फाइनेंशियल का प्रेशर होता है तो उनको दिखता है हमें, And that generally turns people off. और वो क्या होता है लोग फिर उनको नहीं चाहते. Another great benefit of our business, which is what I was looking for, was to take control of my financial future. दूसरा बेनिफिट ये हमारे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल हम लोग खुद ले सकते हैं. You see, in this business, you can achieve anything you're willing to work for. इस बिजनेस में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो. You want to fulfill your dreams, you can do that here. अगर आप अपने सपने को फुलफिल करना चाहते हो यहाँ आप पा सकते हो. It doesn't matter what your background is. आपका बैकग्राउंड इसमें मायने नहीं रखता. It doesn't matter what caste or class you came from. आप कौन से कास्ट से हो ये मायने नहीं रखता. You can achieve your dreams and goals here if you are coachable, you apply our systems, and you work hard. आप अपने सपने को अचीव कर सकते हो अगर आप कोचेबल हो और आप हार्ड वर्क करते हो. And of course, strive for excellence to be the best that you can be. और अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हो. One of the things that I love about our company is that we offer some of the finest science-based products in the world. हमारे कंपनी का सबसे खासियत ये है कि हमारे पास साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. You know, I could have been out selling school buses, but what good would that do? I can now market science-based products that improve my life and the lives of others. मैं आज एक साइंस बेस्ड प्रोडक्ट में आपके लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो उनके लाइफ को अच्छा कर सकता है और मेरे लाइफ को भी. And our compensation plan, you can see the money I've earned. Whatever it is that you want to earn, we have a compensation plan that can pay you. हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान है आप उसमें बहुत पैसा इनकम कर सकते हो. जैसे मैंने इनकम किया है तो आप अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर सकते हो यहाँ में. And we have a very simple system. Just like franchises have a system, we have a system. हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है. जैसे फ्रेंचाइजी लोगों का सिस्टम होता है उसी तरह हमारा सिस्टम है. And if you're coachable and you're willing to follow the system with excellence, you can have amazing results. अगर आप कोचेबल हो और हमारे सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. And then the number one thing I was looking for was I wanted to enjoy a good quality of life. और सबसे पहला चीज जो मैं देख रहा था इसमें कि मेरे को एक बहुत अच्छा लाइफ चाहिए था. I wanted to do what I wanted to do when I wanted to do it. मेरे को ऐसा चाहिए था जब मैं करूं तब मैं करूं. अपने कंट्रोल में मैं रहना चाहता था. I wanted to travel the world. मैं दुनिया घूमना चाहता था. I wanted to have a nice home and a nice car. एक अच्छा गाड़ी एक अच्छा घर चाहिए था मेरे को. I wanted a business where I could enjoy my life and not be under stress and pressure every day. मेरे को एक अच्छा बिजनेस चाहिए था जो मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूं ना कि मेरे को प्रेशर या स्ट्रेस हो. So let me share with you a little bit of my journey. अभी आपको जर्नी को मैं मेरे जर्नी को शेयर करता हूं आपके. This is me at my first black tie event. ये मेरा फोटो है पहला ब्लैक टाई इवेंट का. You can see I had hair back then. उस टाइम मेरे चूल थे बाल में, मेरे हेड में बाल थे. One of the first things I did is I gave my leaders an incentive that if they achieve certain milestones that we would go to the Arctic Circle and go fishing. मेरे लीडर्स को मैंने एक इंसेंटिव दिया था अगर आप कुछ अचीव करते हो तो मैंने उनको आर्टिक सर्कल में ले गया था
फिशिंग करने के लिए। So I took a few of my top leaders and we went to the Arctic Circle and had a great time. ये मेरे टॉप लीडर्स है जो हम लोग आर्टिक सर्कल में गए और बहुत अच्छा समय बिताए। Now we were smoking cigars and I don't even smoke, उस समय मैं सिगार पीता था पर अभी मैं नहीं पीता। but we were having a good time. बहुत अच्छे समय बिताए हम। One of the great things about this business is I've been able to coach my son's Little League baseball team. I've been able to be at all my children's events. इस बिजनेस ने मेरे को समय दिया है मेरे बच्चों को कोचिंग देना और मेरे बच्चे बेसबॉल खेलते हैं उनको मैंने कोचिंग दिया था। So many times at my children's events there were parents missing because those parents had to work. मेरे बच्चे के इवेंट में बहुत ऐसे इवेंट थे जो उनके पेरेंट्स नहीं आते थे। See, in this business, you are in control of your schedule, so you can do whatever is important to you. इस बिजनेस में आपके समय आपके कंट्रोल में रहता है और आप कुछ भी कर सकते हो समय के साथ। And I love fishing. और मैं फिशिंग बहुत पसंद करता हूँ। So I got my children started young when they could hardly even hold a fish. मेरे बच्चे जब मछली भी नहीं पकड़ सकते थे तभी उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया फिशिंग में। And we did a lot of traveling to different places over the summer months, and many times we went fishing. और गर्मी के दिन में हमने बहुत ट्रैवल किया फैमिली के साथ और हम लोग फिशिंग भी किए। And one day the fishing was so good, my daughter was showering and we said, "Honey, the fishing is great." हमने एक बार फिशिंग किया था और मेरे लड़की वो नहा रही थी, वो नहा के बाहर आई वो मछली को छूने के लिए। So she put a towel on her head and she came out and caught that big whopping fish. अपने हेड में टॉवल बांध के वो बाहर आई बाथरूम से मछली को पकड़ने के लिए। It almost pulled her in the water. वो मछली इतनी भारी थी वो गिर गई। My wife, she always seems to catch the biggest fish. मेरे वाइफ सबसे ज्यादातर सबसे बड़ा फिश पकड़ लेती है। But one day I caught a bigger fish. पर एक दिन मैं उससे ही बड़ा मछली मैंने पकड़ा। This is a big salmon. ये बिग सैमन है। This is a big grouper that I caught offshore fishing in the Gulf of Mexico. ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में मैं इसको पकड़ा था ये मछली को। And one of the things that I did with my children is I took them to Alaska. और मेरे बच्चे को मैंने अलास्का भी ले गया। And every day we went on a small airplane and fished a different part of Alaska. और उस समय अलास्का में हम लोग प्लेन में घूमे थे। One of the things we enjoyed doing as a family every summer was going camping. हम लोग हमारे फैमिली एक एंजॉय करते हैं कैंपिंग जाते हैं गर्मी के दिन में। A lot of bonding takes place when you're camping. वहाँ भी हम लोग फिशिंग करते हैं। One of the great things about this business is it's afforded me the financial ability to hire the best people to train my children at the things that they had an interest in. इस बिजनेस ने मेरे को ऐसा चीज दिया है कि मैंने बच्चों के लिए मैंने बहुत अच्छे कोच या एक्सपर्ट्स को मैंने दिलाए उनके कोचिंग के लिए। My son wanted to play baseball, so I hired professional baseball players to teach him how to play baseball. मेरा बच्चा बेसबॉल खेलना चाहता था तो इसीलिए मैंने उसको बेसबॉल का अच्छा एक प्रोफेशनल कोच दिलाया उसके लिए। My daughter wanted to play violin, so I hired the best violin teacher to teach her. मेरे लड़की वायलिन बनना चाहती थी उसके लिए मैं अच्छा एक वायलिन टीचर दिया उसको। Because one of the things I learned is if there's something you want to be successful at, the smartest thing you could do is to find somebody who's successful and then do the same thing they've done. मैंने ये समझा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक ऐसा आदमी खोजिए जिसको ऑलरेडी वो मिल चुका है और उसको फॉलो कीजिए। One of the things that I've been able to do too is been able to bless my dad. और ये भी मैंने देखा कि मेरे अपने पिताजी को भी बहुत कुछ दिया है। My dad was a pastor in a church. मेरे फादर पास्टर थे एक चर्च के। And as many of us know, most of these pastors don't make enough money to hardly survive. जैसे हम लोग जानते हैं पास्टर्स लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। And then when they retire, they have no money. और जब रिटायर होते हैं उनके पास पैसा ही नहीं होता। So I've been able to buy my dad a beautiful condo overlooking the ocean. और मैंने मेरे पिताजी के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा ओशन के ऊपर। I bought him a Cadillac, which is a really nice car in the United States that he could drive in. एक कैडिलैक गाड़ी भी दिया है जो बहुत बड़ा गाड़ी होता है अमेरिका में। In fact, I'll tell you that I'll read to you very briefly a message he sent to me just before I came here. मैं पढ़ना चाहता हूँ एक मैसेज जो मेरे पिताजी ने मेरे को लिखा जब मैं इंडिया पहुंचा था। He always is telling me how grateful he is for what I've done for him. वो मेरे को बोलता रहता है हमेशा कि तुम्हारे लिए मैं कितना खुश हूँ। He said, "Before I sleep tonight, I want you to know my overwhelming happiness and joy your life has brought to me." मैं सोने से पहले टॉड तुमको बोलना चाहता हूँ तुम मेरे जिंदगी में कितने खुशी लाए हो। Have a great and rewarding trip in India. तुम इंडिया में जाके बहुत अच्छा ट्रिप करो। Undoubtedly in India, there are more than you will ever know who will catch
an inspiration of hope to better their lives because of you. इंडिया में अभी ऐसे लोग होंगे जो तुमको लेके बहुत पसंद करेंगे, इंस्पायर होंगे और अच्छा लाइफ उनको मिलेगा। Love you, Dad. So I've been able to take care of my dad and my mom. मैं अपने पिताजी, मेरे माताजी दोनों को मैंने बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया है। I've also been able to travel the world. दुनिया भी मैं घूमा हूँ। My youngest daughter, you see right there, by the time she moved out of the house, she had stamps in her passport from 27 different countries. मेरे छोटी लड़की के पासपोर्ट पे 27 कंट्री का स्टैंप लगा हुआ है। This was the Great Wall of China. ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। This was one of the reward trips the company paid for us to go on. ये एक रिवॉर्ड ट्रिप है कंपनी का। Every year we go on 2 reward trips हर एक साल हम 2 रिवॉर्ड ट्रिप में जाते हैं to fantastic locations, और बहुत अच्छा लोकेशन में जाते हैं। all paid for by Unicity. सब पैसा कंपनी देता है। My son loves to climb mountains, so we climbed 14,000-foot mountains, which is almost 5,000 meters. मेरा लड़का माउंटेनिंग अच्छा चाहता है और हम लोग उस दिन how much you said 5,000 Yeah. 5,000 मीटर के माउंटेन को कवर किए। And I get to do all these things and not feel any stress that my business is going to fall apart, because in this business there's no emergencies. मैं ये सब करता रहता हूँ और मेरे को चिंता ही नहीं होता मेरे बिजनेस के बारे में, बिकॉज मैं अपने समय का कंट्रोल में हूँ। This is my wife and I in Jerusalem. और ये मेरे वाइफ के साथ मैं जेरूसलम में हूँ। She wanted to go to Jerusalem, so we bought a ticket, sat in business class, slept flat, went to Jerusalem. और मेरे वाइफ ने बोला हमको जाना जेरूसलम, हमने बिजनेस क्लास का टिकट लिया, दोनों आराम से सो के गए प्लेन में। For our 30th anniversary, we went on the highest rated cruise line in the world to the Mediterranean, where we went to Greece and Italy and some beautiful countries. ये हमारा ये एनिवर्सरी का क्रूज है जो हम लोग ग्रीस में गए थे इस क्रूज के। We went to Alaska and and we're able to see one of the largest glaciers in the world. हम अलास्का गए जहाँ में सबसे बड़ा ग्लेशियर देखा हमने। And for her 50th birthday, my wife likes gifts. 50 साल के सालगिरह में बर्थडे में मेरे वाइफ को मैंने गिफ्ट दिया है। So I bought her a brand new Mercedes. एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज दिया मैंने। Yeah. Paid cash for that Mercedes. और कैश में दिया मैंने। One of the things that now I enjoy with my grandchildren is doing fun things with them. अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ मैं एंजॉय करता हूँ। This is my grandson from Ethiopia. ये मेरा ग्रैंडसन है इथियोपिया से। My son and daughter-in-law adopted him when he was 1 year old. मेरे लड़के और मेरे डॉटर इन लॉ ने इसको अडॉप्ट किया है। They wanted to provide for him a better life than he would have had. वो चाहते हैं इसको एक अच्छा लाइफ दे हम लोग। And you can see we got a home in the mountains. My grandchildren come and they put bubbles in our spa and turn it into a big bubble bath. अमेरिका के पहाड़ियों में मेरा घर है और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस वहाँ हम लोग बात कर रहे नहा रहे हैं उसमें। This last summer we all were up there and we went hiking and had a great time in the mountains. गर्मी के दिनों में हम लोग वहाँ थे और हम लोग ने हाइकिंग किया। My wife and I, when we're in the mountains, which we live in during the summer months, we go hiking almost every day to different beautiful places. जब हम लोग हमारे पहाड़ी के घर में रहते हैं तो मैं और मेरे वाइफ हम लोग रोज हाइकिंग में जाते हैं। Never feeling any stress or pressure. कभी हमारे अंदर स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होता। This Christmas, my wife said, "Honey, what would you like to do for Christmas?" इस क्रिसमस में मेरे वाइफ ने पूछा था तुम इस क्रिसमस में क्या करोगे टॉड? Now, during the winter months, we live in Florida विंटर में हम लोग फ्लोरिडा में रहते हैं। because it's warm in Florida. वहाँ गर्मी होता है। We don't like being cold unless we're in the snow. हम लोग ठंडी में नहीं रहना चाहते, अगर वहाँ स्नो हो तब मैं पसंद करता हूँ। So I told her for Christmas this year, I wanted to hike up to a remote cabin in the mountains and spend Christmas there. और मैंने बोला मेरे वाइफ को कि क्रिसमस में मैं और पहाड़ी चढ़ूंगा और पहाड़ी के ऊपर हम लोग एक कैबिन में रहेंगे। I looked at the weather forecast and saw they were predicting a blizzard. मैंने सुना वेदर फोरकास्ट को क्या वहाँ आंधी तूफान आने वाला है पहाड़ी में। But I didn't want to tell her. She went to want to go. और पर मैंने मेरे वाइफ को नहीं बोला बिकॉज वो नहीं जाएगी तब। So I went back there with some of my family and we stayed up at this cabin. और फिर हम लोग पहाड़ी को चढ़े और इस कैबिन में रुके। The snow was blowing so hard, everybody had to wear goggles. इतना तूफान था कि हमारे आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स पहनना पड़ा हमको। The snow was so deep we couldn't carry our backpacks, so we had to pull them on sleds. स्नो काफी डीप था तो हम लोग अपने पीठ में कुछ ले नहीं सके तो हमको ट्रॉली में लेना पड़ा सामान। The only way we could get water is we had to melt the snow to get water. पानी भी नहीं था, हमको स्नो को पिघला के पानी पीना पड़ा।
During the summer months, as I said, we live in Florida, and fortunately, we live on a beach where we just look right out over the Gulf of Mexico every day. मैंने बोला समर के टाइम में हम लोग फ्लोरिडा में रहते हैं और जब मैं उसमें रहता हूँ तो हमारे बीच के ऊपर मेरा घर है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में देखते रहता हूँ. So during the summer, we live in the mountains, and during the winter, we live on the ocean. समर के टाइम में पहाड़ी में रहते हैं और गर्मी के टाइम में हम लोग माउंटेन्स करें. So we can do what we want, we can live where we want, all because of unicity. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब भी कर सकता हूँ, टाइम मेरे हाथ में है बिकॉज यूनिसिटी के साथ में हूँ. While I'm in Florida, I love playing tennis, and so that's what I do 4 or 5 days a week for my exercise and for fun. जब मैं रहता हूँ फ्लोरिडा में तो मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ तो मैं सप्ताह में कई बार मैं टेनिस खेलता हूँ मेरे दोस्तों के साथ. This is now my family. I have 4 children, 5 grandchildren, and a 6th one due in April. ये मेरा फैमिली है, 4 बच्चे हैं मेरे पास और 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, नंबर 6 आने वाला है. So to think when I got started, I had hair and 2 little kids. जब मैंने स्टार्ट किया था यूनिसिटी मेरे पास बाल थे और 2 बच्चे थे छोटे छोटे. And now 27 years later, I've got almost 6 grandchildren and no hair. 27 साल बाद मेरे पास 6 ग्रैंड चिल्ड्रन है और सर में बाल नहीं है. Now, do you want to know the number 1 key to my success? आपको जानना है मेरा सक्सेस का नंबर 1 क्या चीज है? We're not saving it for the end of the show. ये चीज मैं आपको आखिर में नहीं अभी बोलना चाहता हूँ. We're starting off with it right out of the gate. अभी मैं शुरुआत में ये बोलना चाहता हूँ. Now, for years, I would ask myself, why have I been successful? मैं सालों सालों अपने आप से पूछता था कि मैं इतना सक्सेसफुल कैसे बना. The reason I would ask myself this question is because I felt if I could figure out why I've been successful, that I could then teach it to others and help them be successful. इस प्रश्न को मैंने इसीलिए पूछा अपने आप को बिकॉज़ अगर मैं जान जाता कि मैं क्यों हूँ सक्सेसफुल, तब जाके मैं किसी को सिखा सकता हूँ कैसे बनना है सक्सेसफुल. And for many years, I felt that the number 1 key to my success was because I was so disciplined. और मेरे को ये समझ में आया कि मेरा सक्सेस होने का नंबर 1 कारण ये है कि मैं डिसिप्लिन था. And tomorrow we're going to talk about discipline. कल बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में. But it was about 10 years ago that I identified the real reason why Todd Smith has achieved such amazing success. 10 साल पहले मैंने ये चीज मेरे को जानकारी आया कि टॉड स्मिथ इतना सक्सेसफुल कैसे बना. And that is because I have strived for excellence. That means I've strived to do the absolute best that I could do at the little things that influenced my success. ये समझ में आया मेरे को कि मैंने छोटी छोटी चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से करना चाहा. Now there are 2 categories of little things. 2 कैटेगरी है लिटिल थिंग्स के बारे में. Number 1, I have strived for excellence at mastering every little part of our business system. पहला है छोटी छोटी चीज हमारे बिजनेस में जो होता है उसके ऊपर मैंने बेहतर से बेहतर बनना सीखा है. Every time I invite someone to look at this business, I ask myself when I'm done, how did I do? What could I have done better? जब भी मैं इस बिजनेस में किसी को मैं इनवाइट करता हूं और इनवाइट करने के बाद अपने आप से पूछता हूं मैंने उनको क्या बोला, इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता था उनके साथ इनवाइट करने के समय. And I'm always looking for the little refinements that will allow me to have greater success when I invite people. और हमेशा मैं तलाश करता था छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स में कि उससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूं. Every time I present the business, when I'm done, I ask myself, how did I do? What could I have done better? जब मैं अपने बिजनेस को प्रेजेंट करता हूं तो अपने आप से पूछता हूं मैंने क्या किया, इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता था. Every time I get a new distributor started, I ask myself, how did I do? What could I have done better? जब मैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्टार्ट करता हूं तब अपने आप पूछता हूं मैंने क्या किया, इससे अच्छा मैं और उनके साथ क्या कर सकता था. There are very few times that I've asked myself, how did I do? What could I have done better? Where I don't have an idea of what I could have done to have been better. बहुत कम समय होता है, बहुत रेयर चीज होता है जब मैं अपने आप से ये चीज नहीं पूछता कि मैं और इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ. Not only do I do that when I'm meeting with people, but even in events like this.
यही चीज मैं सिर्फ आदमी को से जब लोगों से मिलता हूं तभी नहीं, पर इस इवेंट में भी मैं जाके अपने आप से पूछूंगा मैं इससे अच्छा और क्या कर सकता हूं. As a result of constantly asking myself, how did I do in that presentation? What could I have done better? I have slides, words that everybody can see all over the room. इसी तरह आज जो मैंने ये स्लाइड बनाया है, उस स्लाइड इस तरह से बनाया है कि आप लोग सब पढ़ सके. I make sure that I include the whole room when I'm talking, not just a little part of the room. इसी तरह मैं आप सभी को देख देख के बात कर रहा हूँ, ना ही मैं एक जगह में देख के बात कर रहा हूँ. I make sure I'm always well prepared so that I can deliver my message with excellence. मैंने देखा है कि मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ कि मेरे मैसेज को मैं सही तरह से आप लोगों को बोल पाऊँ. I even made sure that I was here an hour early to make sure that everything was set up with my presentations correctly. इसी तरह मैं यहाँ 1 घंटा पहले पहुँचा था देखने के लिए कि मेरा प्रेजेंटेशन सही तरह से हो आज के इवेंट में. As all of you who came in the room today, how many of you did I shake your hands? आप लोग जितने लोग आज रूम में आए हैं, कितने लोगों से मैंने हैंडशेक किया है? Look at all the hands. So I came here early to make sure I could greet all of you. मैं यहाँ पहले पहुँचा था बिकॉज मैं आप सबको को ग्रीट करना चाहता था. Because I've learned that if I come to a presentation early and greet people, they like me before I even get started. मैं ये सीखा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन से पहले मैं पहुँच जाता हूँ और जो लोग आते हैं उनको मैं ग्रीट करता हूँ तो वो लोग मेरे को और पसंद करेंगे. Now that's not so important for this because all of you know me, but when I'm doing a business presentation and there's guests in the room, if I can get them to like me before I get started, I have a big advantage. मैं भी आज आप लोग सब मेरे को जानते हो, आप लोग गेस्ट नहीं हो, पर यहाँ अगर गेस्ट होता और मैं यही काम करता तो प्रेजेंटेशन से पहले वो मेरे को लाइक करना शुरू कर देते. Like I created this PowerPoint on a MacBook Pro, but I came here early today because we're using a PC to make sure that my presentation wasn't adjusted and not presented correctly. मैंने जिस प्रोग्राम को लेके ये स्लाइड बनाया है और हमारा जो लैपटॉप हमारे पास है इसका अलग प्रोग्राम है, इसी चीज को मैं तालमेल करने के लिए मैं 1 घंटा पहले पहुंचा ताकि मेरा प्रोग्राम इसमें फिट हो जाए. So there are thousands of little refinements that I have made over the years by always asking myself, how did I do? What could I have done better? यही छोटी छोटी बातों के ऊपर मैंने नजर देके मेरे लाइफ को मैंने आगे बढ़ाया है आज की तारीख में. I even think about when I'm meeting with somebody in a restaurant, where I want to be seated and how I want them seated. ये भी मैं करता हूँ, रेस्टोरेंट में अगर किसी के साथ बैठना है मैं ये सोच लेता हूँ कहाँ बैठूंगा, किस पोजीशन में बैठूंगा मैं उनके साथ. If this was a restaurant, I would be seated here and my guest here so that my guest is not distracted with people coming in and out of the restaurant. अगर ये रेस्टोरेंट होता तो मैं यहाँ बैठता और मेरे गेस्ट मेरे सामने बैठते ताकि वो पीछे ना देख पाए. So I'm always looking at every little thing I'm doing and I'm asking myself, how did I do? What could I have done better? और मैं हमेशा वो छोटी छोटी बातों को के ऊपर नजर दे रहा हूँ, मैं उस पे बात पे सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ. And friends, I have mastered this business by constantly asking myself, how am I doing? What could I have done better? और इस बिजनेस के ऊपर मैं मास्टर बन चुका हूँ. अभी मैं अपने आप से पूछता हूँ हमेशा मैंने क्या किया, इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ. Everything from my shoes being shined, शुरुआत से मेरा जूता का जो शाइन है, to the way I greet somebody that I meet. जिस तरह मैं उनसे साथ में ग्रीट करता हूँ, हैंडशेक करता हूँ, Everything I look at. सब चीज के ऊपर मैं नजर देता हूँ. The second category I've strived for excellence at is the little things that I could do to be the best person and best leader I can be. और दूसरा कैटेगरी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात जिसके ऊपर मैं काम करके मैं एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ. Now, when I say being the best person or the best leader I can be, that right there is thousands of little things. एक अच्छा आदमी, एक अच्छा लीडर बनने के लिए हजारों चीज होते हैं. It's everything from the way I greet somebody and shake their hand शुरुआत होता है आप किसी को ग्रीट कैसे करते हो, हैंडशेक कैसे करते हो and smile और कैसे उनके साथ स्माइल करते हो and give them a firm handshake. और एक अच्छा हैंडशेक देते हो. I'm very thoughtful about the way I present myself so that I demand respect and attention. और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो ताकि वो अगला आपको रिस्पेक्ट करे. Because people look at me and they form an opinion. बिकॉज लोग मेरे बारे में सोचते हैं, देखते हैं और एक अपना एक अंदाजा करते हैं मेरे ऊपर. If I present myself as a professional, people treat me like a professional. अगर मैं अपने आप को प्रोफेशनल जैसे ट्रीट करता हूं तो लोग हमको ऐसे देखते हैं. Other little things that I do is I am very responsive to when somebody sends me a text or an SMS message. दूसरा चीज मैं ये करता हूं, अगर मेरे को कोई एसएमएस भेजता है तो मैं बहुत उसको रिस्पॉन्ड करता हूं. Or a WhatsApp message. या व्हाट्सएप में अगर कोई भेजता है मेरे को. My general rule is I try to respond to all my
text, SMS, or WhatsApp messages within a couple hours. मेरा रूल है कि SMS हो या टेक्स्ट हो या WhatsApp हो, कुछ ही घंटों में मैं रिप्लाई करता हूँ. You know why? आपको मालूम क्यों? Because that's what people expect of me. Because लोग मेरे को वैसे एक्सपेक्ट करते हैं. I make it a point to return all my emails within 24 hours. मैं पॉइंट करता हूँ कि मेरे ईमेल जितने भी हैं 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई करता हूँ. Is there anybody in this room that's ever sent me a message that I did not respond to? इस रूम में ऐसा कोई आदमी है जो मेरे को मैसेज भेजा है आपने और मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया? You could ask the world that question and the same number of hands will go up. दुनिया में पूछ सकते हो मेरे बारे में और इसी प्रश्न के ऊपर और कोई भी ऐसे सब लोग ऐसे ही बोलेंगे. Because I return everybody's message, including those people I don't like. Because मैं सबका मैसेज रिप्लाई करता हूँ, ऐसे भी लोगों का रिप्लाई करता हूँ जिनको मैं नहीं चाहता. Because that's my brand. Because ये मेरा ब्रांड है. That's who I am. मैं वही आदमी हूँ. You can't be one way in this business and another way in your personal life. आप इस बिजनेस में एक तरह के आदमी नहीं हो सकते और अपने पर्सनल लाइफ में दूसरी तरह के आदमी नहीं हो सकते. Yeah, you are who you are. आप हो जो हो. So I am constantly looking at every little thing I can do to be a better person. मैं हमेशा छोटी-छोटी बातों पे ऊपर नजर देता हूँ ताकि मैं एक अच्छा आदमी बनूं. I wrote a book called Little Things Matter because little things matter. मैंने एक किताब लिखा Little Things Matter because छोटी-छोटी बातों को मैटर करता है. I am always looking at every little thing I could do to be a better husband. मैं वो छोटी-छोटी बातों को नजर देता हूँ ताकि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूं. To be a better parent. एक अच्छा पेरेंट बनूं. To be a better friend. एक अच्छा दोस्त बनूं. Yeah, because that's who I am. Because मैं वैसे ही एक आदमी हूँ. Nobody who knows me close will ever say that I'm one way in unicity and a different way outside of unicity. जो मेरे को जानते हैं बहुत करीब से वो जानते हैं कि मैं जैसा यूनिसिटी में हूँ वैसे मेरे पर्सनल लाइफ में भी हूँ. I treat people with respect, even the people I don't know and that will never join our business. मैं सभी लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता हूँ. ये ऐसे भी लोग जो हमको ज्वाइन नहीं करते. Yeah, I always see people at the airports treating flight attendants and gate agents like they're dogs. मैं देखता हूँ हमारे एयरपोर्ट्स में जो हमारे गेट में जो रहते हैं और जो फ्लाइट एयर होस्टेस रहते हैं बहुत खराब ट्रीटमेंट करते हैं पैसेंजर्स. But I treat everybody the way they should be treated. पर मैं बहुत अच्छी तरह से इनको ट्रीट करता हूँ. That's why so often they upgrade me to first class for free. इसीलिए मेरे को कभी-कभी मेरा अपग्रेड भी हो जाता है फर्स्ट क्लास में बिना पैसा दिए. Yeah, and by being nice to them, I'm happy and they're happy. अगर आप सबसे अच्छा होते हो तो वो आपसे भी मिलके खुश होते हैं. Because it's who I am. Because मैं ऐसा ही आदमी हूँ. So my challenge to each of you here today is to look at everything you do every day in this business and in your personal life and ask yourself, how can I get better? तो मेरा चैलेंज है आप लोगों के ऊपर कि आप अपने जिंदगी में छोटी-छोटी बातों को देखते रहिए. आप क्या कर रहे हो उससे बेहतर क्या कर सकते हो ताकि आप एक अच्छा आदमी बने. And things you can do to help you in this journey is you can read books and listen to audio programs where you learn what successful people have done so that you can see what they have done and then apply it to your own life. इसके लिए आप अच्छा किताब पढ़ सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो और इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर सकते हो. I have spent hundreds of hours learning from successful people. मैंने 100 से भी ज्यादा घंटा बिताया है सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने के लिए. And I'm just looking for the one or two little things that I'm not doing that I could pick up on to get better. उनमें से मैं एक या दो कुछ ऐसा चीज खोज रहा हूं जो मैं नहीं कर रहा. Still, after 27 years in this business, I am every day looking at what I can do to be better. 27 साल के बाद इस बिजनेस में भी मैं अभी भी खोज कर रहा हूं कि इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूं. You know, one of the keys to my success when I got started is that this is who I was before I got started with Unicity. यूनिसिटी में आने से पहले मैं इसी तरह का ही एक आदमी था. So when I got started and I called people and I invited them to look at what I was doing, almost everybody was interested. इसीलिए जब मैंने शुरुआत में ही लोगों को इनवाइट किया और मैंने दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को मिलने के लिए ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो गए थे. I've had people join and talk to 10 people and sponsor 8 of them. मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे को ज्वाइन किए, उसके बाद उन्होंने 10 लोगों से बात किया और 8 लोगों को स्पॉन्सर किया. I've had other people join and talk to 100 and not sponsor one. ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को ज्वाइन किए, उसके बाद उन्होंने 100 लोगों से बात किया और उन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया.
The difference is the person who sponsors 8 out of 10 is somebody who is highly respected, and the person who can't sponsor 1 out of 100 is not. इसका मतलब जिस आदमी ने 10 लोगों से बात किया और 8 को जो उसने ज्वाइनिंग कराया वो हाईली रिस्पेक्टेड है, और जिस आदमी ने 100 से बात किया और एक भी नहीं ज्वाइनिंग किया उसका रिस्पेक्ट में बहुत कमी है। As I travel the world, people take pictures of me at these events. जब मैं दुनिया घूमता हूं तो ऐसे इवेंट्स में लोग मेरा पिक्चर लेते हैं, And then they tag me in the picture. उसके बाद उनको टैग भी करते हैं पिक्चर में, And so I click on to see who they are. और फिर मैं क्लिक करता हूं ये कौन है, And there'll be people that will tag me in a picture and there'll be one like. One person who liked it. उसमें से होगा पूरे पिक्चर में सिर्फ एक ही आदमी होगा जो मेरे को लाइक करेगा, And then there'll be somebody who tags me in a picture and there's 100 people who like it. और एक होगा पिक्चर जहां में 100 लोग मेरे को लाइक करेंगे। The person who had one like, I can look at their page and nobody likes anything they're putting up. तो इस पेज में मैं देखता हूं कि उसने अब टैग किया है, सिर्फ एक लाइक है उसमें, And the person who had 100 likes, I look at their page and everybody likes their posts. और जो 100 में है उसको उसका टैग को सब लाइक करता है। Because the person who has 100 likes is somebody who is respected by the people who know him, and the person who has one like is somebody who's not respected. इसका मतलब है जिसके पास 100 लाइक है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, जिसके पास एक लाइक है उसको शायद नहीं भी करते हैं रिस्पेक्ट लोग। So the little things I did in real estate, I strive for excellence to be the best real estate agent I could be. So रियल एस्टेट मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को ठेला था सबसे अच्छा से अच्छा बनने के लिए, And I strive for excellence to be the best person I could be. और अपने आप को मैंने ठेला था अच्छा से अच्छा आदमी बनने के लिए। And as a result of that, I built a brand for myself that when people thought of Todd Smith, they thought of somebody that they had a high level of respect for. और ऐसे करते करते मेरा एक ब्रांड बना, टॉड स्मिथ का ब्रांड। जब टॉड स्मिथ के बारे में कोई सोचते थे तो ये बोला ये आदमी ऐसा है, इसका लेवल ऑफ ट्रस्ट बहुत हाई है इस आदमी के ऊपर। And so when I was able to come into this business and I called people, my first month I sponsored 20 people. और जब मैं आया इस बिजनेस में और मैंने लोगों को बुलाया तो पहले महीने में मैंने 20 लोगों को स्पॉन्सर किया। And because these people were respected, they sponsored a lot of people. और ये जो 20 लोग आए थे इनको बहुत रिस्पेक्ट था उनका भी, और उन्होंने आगे जाके बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया। And that's how I did 40,000 points my first month. इसी तरह मैंने पहले महीने में 40,000 पॉइंट किया, 200,000 points my second month. 2 लाख पॉइंट सेकेंड मंथ में, 300,000 points my third month. 3 लाख पॉइंट तीसरे महीने में। Because I had been respected from what I had done prior to joining Unicity. बिकॉज मेरे पास रिस्पेक्ट था यूनिवर्सिटी में आने से पहले थे। And because I had strived for excellence as a person, I was able to come into this business and perform these activities at a high level. और बिकॉज मैं बेहतर से बेहतर आदमी बनना चाहता था हमेशा, और यहाँ आके भी मैंने वही कोशिश किया। And friends, everything you learn in building a successful Unicity business, you can apply to many areas of your life to be better at. और दोस्तों जो भी आप सीखोगे यूनिवर्सिटी के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इसी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। Now, if I was to jump off this stage, what's the chance that I would just stay in the air, or do you think I would just go to the ground? अगर इस स्टेज के नीचे, इस स्टेज के ऊपर से मैं कूदूं तो क्या चांस है मैं हवा में रहूंगा या गिरूंगा नीचे? I'm going to go to the ground, right? And that's called the law of gravity. और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। I'm going to tell you right now the law of income. मैं अभी बोलना चाहता हूँ लॉ ऑफ इनकम क्या है। All over the world it's the same. पूरे दुनिया में ये सेम होता है। Income equals value. इनकम और वैल्यू इक्वल होता है। If this is your value and this is your income, for your income to grow, you must first grow for your income to grow. आपका इनकम को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपका वैल्यू ग्रो होना चाहिए। If you want your income to grow more, you must first grow, then your income grows. अगर आपका इनकम को ग्रो करना है तो सबसे पहले आपका वैल्यू को ग्रो करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। How many people do you know who make more money than their value? कितने लोग जानते हो आप जो अपने वैल्यू से ज्यादा पैसा कमाता है? Probably no one. शायद कोई भी नहीं। Because the world and the law of income is that we earn what we're worth. बिकॉज दुनिया भर का लॉ है, हमारा जो अर्निंग होता है हमारे वर्थ के ऊपर होता है। So if you want to earn more, you need to be worth more. अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा बनना पड़ेगा। By applying these little things to your business and personal life. ये छोटी छोटी चीज अपने बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। Now if you want your rank to grow, you must first grow. अगर आपको अपना रैंक ग्रो करना है तो पहले आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। So you grow and you become a senior manager. अभी देखिए आप ग्रो हो रहे हो, आप बन रहे हो सीनियर मैनेजर। You want to then be a director, you must first grow
and then your rank grows. उसके बाद आपको बनना डायरेक्टर, तो सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, फिर आप बनोगे। You then want to be a senior director. It doesn't happen by just hard work. No, you need to grow, and then your rank grows. बनना आपको सीनियर डायरेक्टर, इसलिए ये आपको बनने के लिए हार्ड वर्क से नहीं होगा, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा सबसे पहले। You then want to go and become executive director. You must grow, and then your rank grows. फिर आपको बनना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, फिर बनोगे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Now, sometimes you'll see somebody's rank grow and their value hasn't. कभी कभी आप देखोगे कोई आदमी का रैंक ग्रो हो रहा है पर वैल्यू ग्रो नहीं हो रहा। And one of two things will happen. इसमें से दो चीज हो सकता है। They will either grow their value to the level of their rank, or their rank will fall back down to their value. अगर वो अपने आप के वैल्यू को ग्रो करते रैंक तक, या उसका रैंक फॉल करता है। So that's why I see people all the time that achieve a rank and then they fall back down because their value was here. बिकॉज मैं देखता हूँ हमेशा उसका रैंक, बहुत लोगों का उनका रैंक मेंटेन नहीं होता, वो गिर जाता है बिकॉज उनका वैल्यू नहीं होता। So if you're an executive director and you want to be a presidential director, you must grow and then your rank grows. अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और प्रेसिडेंशियल पीडी बनना चाहते हो, तो पहले आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। If you then want to be a sapphire, you've got to grow and then your rank grows. उसके बाद अगर आपको सफायर बनना है, तो सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, फिर बनोगे सफायर। If you want to be a ruby, you must grow and be worth being a ruby, and then you will become a ruby. अगर रूबी बनना है आपको, सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, रूबी का वर्थ होना पड़ेगा आपके अंदर, तब जाके बनोगे रूबी। And then when you're a ruby, if you want to be a diamond, you must continue to build your value, and then your rank will grow. आप रूबी हो, रूबी से आपको डायमंड बनना है, तो आपको रूबी होते हुए आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप डायमंड बनो। See, just working hard is not enough. हार्ड वर्क करने से नहीं होगा सिर्फ। You need to be a person who is growing as a person, growing as a unicity leader for your income and rank to grow. सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा एज ए लीडर, एज ए पर्सन। So, very simply, if you want your income and rank to grow, you must grow first. उसका मतलब अगर आपको इनकम और आपको रैंक ग्रो करना है, तो सबसे पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। And if you want to be a diamond, you must strive for excellence at mastering your business system, whatever it is, and strive for excellence in growing as a person and leader. अगर आपको डायमंड बनना है, तो अपने आप को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनने के लिए ठेलना पड़ेगा। So don't ever forget the law of income. सो आप कभी मत भूलिए इनकम का लॉ, It's also the law of rank. और यह इनकम रैंक का भी लॉ है। Income follows value. इनकम वैल्यू को फॉलो करता है, Rank follows value. रैंक भी वैल्यू को फॉलो करता है। You're not happy where you're at, you're the one that can change it. अगर आप खुश नहीं हो जहां हो, आप ही उसको चेंज कर सकते हो। For your life to improve, you must first improve. आपके लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। For things to get better, you must first get better. चीजों को अच्छा होने के लिए आपको अच्छा बनने पड़ेगा। To achieve what you've never achieved before, you must become someone you've never been before. कुछ चीज पाने के लिए जो आपने कभी नहीं पाया, आपको ऐसा आदमी बनना पड़ेगा जो आप कभी नहीं बने। You must be willing to do what you've never done before. आपको वैसा काम करने को तैयारी होना पड़ेगा जो काम आपने कभी नहीं किया। So my challenge to you is this. तो मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए अभी, Master whatever business system you're following. जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसका मास्टर बन जाओ। Master it means that you've studied it and every day you're getting better. मास्टर का मतलब है आप पढ़ते हो और हर एक दिन अच्छा से अच्छा बनना चाहते हो। And then strive for excellence as a person to improve everything you do. और एक अच्छा आदि बनने के लिए चेष्टा जारी रहना चाहिए। Strive for excellence to be a better spouse. एक अच्छा वाइफ बनने के लिए चेष्टा कीजिए। If you have children, strive for excellence to be the best parent you can be. अगर बच्चे हैं आपके पास, तो एक अच्छा पेरेंट बनने का चेष्टा कीजिए। Strive for excellence to be the best friend you can be. एक अच्छा दोस्त बनने का चेष्टा कीजिए। Strive for excellence to be the best community leader that you can be. एक अच्छा कम्युनिटी लीडर बनने का चेष्टा कीजिए। Are we clear? मैं क्लियर हूं?